In 3, 2, 1. Welcome to the 38th episode of the King Pair podcast. आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? कुमैल, please let our viewers know. Today we're going to start off by talking about the PSL, something that I don't watch. Then we're going to talk about the England versus India Test series. And finally, we're also going to touch upon, just a slight touch. Who gets to talk about cricket? So, PSL से शुरू करते हैं. पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट एक ही है, लेकिन प्रीमियर टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है कल से. पहला मैच खेला गया इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान. आई थिंक टू वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स. Lahore obviously winners. Islamabad with the Shah brothers and a few other changes. और लगा के बहुत कोई करीब मुकाबला होगा, बहुत टक्कर का बहुत कांटेदार मुकाबला होगा. कोई और एडजेक्टिव या शायरी आ रही है आपके जहन में? नहीं. ओके, सो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. विकेट बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, जिसपे इस्लामाबाद पुट अप Islamabad put up anything. Lahore put up they put up good runs. Lahore's bullshit. Yeah, I think what was quite disappointing was Islamabad's bowling was quite disappointing. Naseem Shah actually didn't fire. वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा depend कर रहे थे, and of course he just wasn't able to score. Bowl that well because अभी मतलब कितने 6-7 महीने बाद मैच खेल रहा है कोई. तो obviously it'll take time for him to get back into match practice and whatnot. लेकिन मैच जो था हाई स्कोरिंग था. इस्लामाबाद ने बिना किसी मुश्किल के चेज़ कर लिया. इसमें दो बहुत अहम मेरे ख्याल से चीज़ें इस्लामाबाद ने की. एक तो शादाब नंबर 3 पे आया और दूसरा 8 बजे सो गए, और दूसरा 8 बजे भी सो गए. और दूसरा था कि सलमान अली आगा नंबर 4 पे आए. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई थिंक वेरी गुड टू सी कि उन्होंने देखा इट्स अ हाई स्कोरिंग मैच. हमारे ओपनर्स आउट हो गए, अच्छा स्कोर करके हेल्स और जो भी साथ था वो आउट हुए. बट या द शादाब एंड आगा द वे दे टुक द अटैक टू देम, मैच ख़त्म करके आए. एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू द पाकिस्तान टीम कि these guys can definitely bat. And I think Islamabad's coming in with a different approach, coming in with a lot more belief. I think they're a very strong team. Yeah. The team to beat in this tournament, despite their not so great bowling at this moment. I think putting people like Shaheen, people like Zaman, and people like Haris. They're the same kind of people, fast bowlers. Yes. To the boundary at 10 and over. It's amazing. Great. Great start for them. मैंने देखा तो नहीं as usual. PSL का मैच था. तो लेकिन just knowing that Shadab comes up and has decided to do that shows a lot of intent, as they say, but it also shows कि I think थोड़ा सा fearlessness है. And maybe franchise cricket में you have that space to experiment a lot, क्योंकि आप पे उस तरह का pressure नहीं होता. आपके पास home crowd advantage भी होता है. You're just enjoying what you're doing. You're playing a league match. And I think for him to be able to use that time to polish his batting skills and to just consolidate his confidence as a number 3 or a number 4 batter is really helpful for the team in general. Obviously फिर बाद में ये मसला होता है कि अगर पाकिस्तान टीम से खेल रहा है तो वो किस नंबर पे जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. लेकिन एक व्यूअर को भी, एक कोचिंग स्टाफ को भी और एक टीम को और उसको ख़ुद भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि he can bat up if he has to, and he can accelerate. Salman Agha's intent also and his play, I think, should be appreciated, क्योंकि काफ़ी सवालात I think उठ रहे थे उसके बारे में भी कि हमने इसको टीम में डाला हुआ है, at least in the T20 team. हाँ, और ये क्या T20 का प्लेयर है? Does he play slow or could he really pace when he has to? And I think उसने जवाबात दे दिए हैं अपने नाकिदीन को, at least from the word go at the start. Faiz is watching this. Ahmed Faiz is watching this. तो हाँ, I think अब मुझे I'm surprised that Lahore sort of faltered and struggled that much. I think what stood and let's talk about this particular player because a lot of controversy has happened around him. Haris Rauf. Yeah. We're talking about the Haris Rauf. The Haris Rauf we're talking about. Haris Rauf has started a lot of conflict. Let's not forget that. One of the biggest ones was, of course, the one between Shoaib Akhtar and Noman Niaz. Haris Rauf was
there and thereabout. PDB. PDB. And he was kind of there and thereabout when that conflict happened, and now he's lost his central contract because he missed the Australia Test series for the BBL. What are your thoughts on this? And this is after a horrific ODI World Cup where he was the highest scoring bowler. And like it doesn't seem like he's recovered from that. His BBL wasn't like too great, nothing much to talk about. And similarly, he got smashed in the last match pretty bad. हारिस चाहे जितना भी उसको फेंटा चढ़ रहा हो, मेरा ख्याल है कि ये एक सेपरेट डिबेट है टू द डिबेट ऑफ वेदर ही शुड बी फायर्ड और टर्मिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिक्ड ऑन, क्योंकि जो रीजनिंग प्रोवाइड की गई है पीसीबी की तरफ से वो ये है कि बिकॉज ही इज़ fit and without any apparent reason, injury or personal issues, he has decided not to play the test series against Australia. His central contract has been terminated. Now, I would say that is a larger debate. और अगर ये Australian cricket board में हो रहा होता है, English cricket board में हो रहा होता है, जहाँ पे एक sense of stability है, जहाँ पे this would have been sensationalized. They would have made a documentary about him कि he decided to leave something for his mental health. जो Ben Stokes की दफ़ा भी लोग नहीं किया था. कोहली याद रहे आपको कि वो 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा, बल्कि he's now missing out on the series entirely. And we don't know what the personal reason here is. He just maybe doesn't want to play this test series या जो भी है. तो एक तो ये है, ठीक है, कि आप अपने अच्छे प्लेयर्स को गुंजाइश में ये नहीं कह रहा कि यू डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल, बट इफ़ दे ऑप्ट आउट ऑफ वन टेस्ट सीरीज एंड यू टॉक टू देम एंड यू फिगर आउट कि ओके दिस मेक्स सेंस, देन यू डोंट पनिश देम फॉर इट. बट इवन इफ़ यू डिसाइडेड टू ऑन अ प्रिंसिपल लेवल, आई थिंक जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि कौन उसको फायर कर रहा है, राइट? बिकॉज what is the PCB? The genealogies. What are the genealogies of this? What is the PCB at this point? Yeah. Right? What is the PCB really? कौन है उसके अंदर? Because हर दिन तो कोई ना कोई बदल जाता है. हाँ, so it's definitely not the chairman taking the decisions, because if it was, then तो जो भी फैसला ले रहा है वो बहुत dubious है, क्योंकि अगर वो 2 दिन पहले आया है और उसका दूसरा या तीसरा फैसला ये है कि मैं हारिस रऊफ जैसे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा रहा हूँ, वो भी एक मुतनाज़ किस्म की शख्सियत है. There are a lot of questions about him. There are questions about his predecessor as well, about the politics of it all. So I think a highly controversial decision, and you can't bring principles into it given the entire context. And there's more news coming out, of course, because बाकी टीम की भी इस बात पे reaction हुई है, and many other players are, especially the big ones, are contemplating, whether a central contract is even something that's worth it. Why can't they just go around play? They'll make just as much, probably more, just playing a few more T20 leagues. इसमें एक चीज़, correct me if I'm wrong, जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि he will not be given an NOC until June. Yeah. So he can't play another league either for the next 6 months. Yes. Absolutely. Which is horrible. Look, now Haris Rauf. हारिस सोहेल भी कहीं चले गया वैसे. हारिस राउफ अगर कोई मंजा हुआ टेस्ट प्लेयर होता ना, तो मैं मान लेता कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक. उसने एक टेस्ट मैच खेला हुआ है पहले, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हाथ नहीं लगाया हुआ. आई थिंक उसके होने से हमारी सीरीज़ पे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली क्योंकि ही इज़ रियली स्ट्रगलिंग. मे बी यू कैन आर्ग्यू कि हाँ इट वुड हैव बीन गुड फॉर हिज ओन क्रिकेट, बट लाइक व्हाई इज़ ऑस्ट्रेलिया द प्लेस यू वांट टू गो एंड I mean get bashed like 700 for 2. ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी थी. और वो भी एक फास्ट बॉलर को जिसका वर्कलोड भी आपने मैनेज करना है, जो आपका T20 का स्ट्राइक, जो मुसलसल क्रिकेट खेलता आ रहा था एवरी सिंगल मैच इन द टूर्नामेंट में आप खेल रहा था. बिल्कुल. एंड अगेन वो कोई टेस्ट प्लेयर प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं था. शाहीन वाज फॉर एग्जांपल, नसीम खैर नहीं था, वो अलग बात है. बाकी सारे जितने प्लेयर्स थे दे वर ऑल फर्स्ट क्लास में, हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. हारिस सोहेल डजंट. आई डोंट थिंक ही वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन टू टेक देयर एनीवे विदाउट एनी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस. वो तो उसकी ओडीआई बॉलिंग में भी नज़र आ गया था कि उससे वो लोड या वो एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग मेंटेन नहीं हो रही थी ओडीआई लेवल के लिए. सो या आई डोंट थिंक इतना कोई बड़ा डिसीजन था. एंड दूसरा जो देखें, वो जाहिर है जब आप किसी को फायर करते तो एक बाकी टीम के ऊपर भी असर पड़ता है, तो उसको अब पता नहीं किस तरह से पीसीबी मैनेज करता है, बिकॉज आई एम श्योर मोर प्लेयर्स एज दे आर अराउंड द वर्ल्ड विल स्टार्ट ऑप्टिंग आउट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स. Yeah, that's all I have to say. I think this is a very weird decision, especially when PCB itself is in disarray, and we're hearing of things about PCB employees saying how terrible it was working there, and how they wanted to leave every other day. So I mean, yeah, it's
Yeah. What can you say? हाँ, I mean, as usual, अपनी क्लास दिखा दी, औकात दिखा दी अपनी PCB ने. Harsh words. हाँ, harsha words. Bhogle, which takes me on to the commentary of cricket. And who can do it? And who should do it. Speaking of Harsha, वैसे तो लोग argue करते हैं कि Harsha को नहीं बोलना चाहिए. I disagree. I think Harsha's good. I think he's very good at pointing out the obvious. Someone who is really bad at even pointing out the obvious is Piers Morgan, who recently had a row with Michael Vaughan over Twitter. A row is कश्ती को चप्पू चला रहे होते हो जब आप, वो कर रहा था कश्ती में. And that's how they shot the episode. We should try that out too. हाँ, वो पीछे बैठा हुआ था, उसको गालियाँ दे रहा था. Impressive. तो खैर माइकल वॉन रूट को काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. एंड विल कम टू द इंग्लैंड इंडिया सीरीज आफ्टर दिस. और उसकी वजह आपको पता चल जाएगी. ही वाज़न्ट परफॉर्मिंग अप टू पार. और उसके ऊपर पियर्स मॉर्गन ने, मेरा ख्याल है, आई होप आई एम राइट ऑन दिस, ही डिफेंडेड जो रूट एंड ही सेड कि ऐसा क्या हो गया अगर उसने इतने ज़्यादा रन्स नहीं मारे, या वो बेसबॉल इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड यू नो इट एटलीस्ट इंथ्रॉल्स यू. जो हमने आर्ग्यूमेंट की थी बेसबॉल वाले एक्सप्लेनर के अंदर कि अच्छा एक साइड ऑफ द कॉइन ये है कि एंटरटेनिंग क्रिकेट होती है. माइकल वॉन ऑन द अदर हैंड सेड कि एक अच्छा कैप्टन वो होता है जो कि अपने आप को किसी एक स्ट्रैटेजी तक महदूद ना रखे और वो बदले एंड अडेप्ट्स टू द सिचुएशन. क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड वन वे एंड यू हैव टू रीड द सिचुएशन एंड प्ले अकॉर्डिंगली. And over this, obviously, there are many different sides of the story. Some people side with Piers Morgan, some people side with Michael Vaughan. Yeah. But at least Michael Vaughan has captained the England Test cricket. What are Piers Morgan's credentials? He talks about a lot of stuff, and he has a show called Piers Morgan Uncensored. So I think is that qualification? I mean, do you think Piers Morgan used to play cricket or played cricket? खेली भी है उसने. Okay. मुझे नहीं पता उसने फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारी है या नहीं. Like that would change everything about this conversation. But having said that, Piers Morgan, I think Piers Morgan is the epitome of a man who got a mic and wants to talk about everything now. वैसे हम भी यही कर रहे हैं. Which is what I wanted to get to as well. Since there are like we have a mic now. We have a mic, but इस mic के through multiple channels explore कर रहे हैं हम. वो शायरी हो, वो मौसीकी हो, तो multiple दिल हो, वो लोगों के दिल हों. By the way, I think something we need to get back into is engaging more with our viewers, getting some stories for them and reading them like we did through Reddit. I think our view idea. Anyway, so who can talk about cricket besides us? I think people who've played cricket, captains, the King Pair. The King Pair captains. The King Pair captains. 4 and people. Yeah, I don't think anyone else really deserves to. I mean, what are you left with? The Bazid Khans and the Athar Ali Khans of the world. The great cricketer. Who even is that? Yeah. Jared Kimber. Let's not go there. Jared Kimber is a fine cricketing mind. I think his use of statistics and the way he also analyzes the game is actually among the best. He's like the PSL of cricket commentary. So the India-England series, which is actually related to what Piers Morgan and Michael Vaughan were talking about. I mean, England is in disarray. They won the first test, shocked everyone. उसके बाद शोधे हो गए और अगले 2 टेस्ट वो बुरी तरह से हारे. आज जो टेस्ट मैच हारे हैं 434 रन से हारे हैं. 434 रन. 434 इतने हम एक टेस्ट मैच में बनाते हैं. ट्रू. टोटल टेस्ट मैच में हम ये बनाते हैं on a good day, on pitches we like, of course. So yeah, it's India's completely. I mean, Jaiswal has scored another double 100. Jadeja scoring, Rohit is scoring, Sarfraz Khan. विकेटें हो गई. That's huge. Yeah, I think that's and then I wondered how many players do we have who are even near that. I think Shaheen has the most, 100 or something. किस में? Tests में, हाँ. नहीं वसीम. No. Current. हाँ. शाहीन हमारा हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है. कितनी विकेटें? 100-200 होंगी. 100 नहीं 200 नहीं हुई. 200 तो यासिर शाह की थी and then he decided to make some bad decisions for his life. यार हाँ, I mean बहुत बड़ी बात है
और एक ऑफ स्पिनर के लिए करना. नेथन लायन के पास कितनी है इस वक्त? नेथन लायन के पास 500 हो गई थी. अभी रिसेंटली हुई थी 500. और अश्विन, आई मीन बहुत बड़ी बात है. लेगी के लिए ये भी होता है कि आप, if you're good at it, you probably get wickets because you have the googly and everything. For a conventional off spinner, not a Saeed Ajmal or a Muralidharan, obviously those are a different class, or Saklan Mushtaq. Both of them chucked. those are like a different class of off spinners जो कि एक different तरीके से गाते हैं. लेकिन your conventional orthodox off spinner to get 500 wickets is huge. The only not the only, but one of the only major variations that Ashwin has is the carom ball, which Arham seems to love. And Nathan Lyon के पास तो I think वो भी नहीं है, quicker one है जो. He just bowls in the same. We've seen him bowl. We've seen that match. Saw him bowl for the whole day in the same place. He's just consistent. And उसके बाल झड़ गए हैं पूरे, तो he's really put in the work clearly. Ashwin, not to forget, is also a podcaster. Let's also not forget he's also the coach of a team now in the IPL. किसको कह रहे हैं? I'm not sure. Maybe he's a mentor or something. Not a coach, a mentor. और बोलता भी अच्छा है. बोलता भी He बहुत अच्छा also has the right to talk about cricket. Absolutely. He's an ex-player. I think he can talk about it. And he's Mankad भी करता था वो तो. Mankad भी करता था. And he really brought into question the ethics and the morality of the spirit of the cricket. I think which most bothered the English people, because Piers Morgan. That's where so-called morality stems from. It's the English who think they own the game. They think they own the game, but they haven't. They've won 2 tournaments just now. So and they're probably not going to win much. I mean, look at what they did in India in the World Cup. They're only so good. It takes them a few hundred years to win a tournament. Or maybe it takes them a 15-hour flight to lose a test series. Wow. And with that, I think we should. Yes, I think that's a great idea. Got behind. The King Pair. Sorry, the King Pair.